This essay is about two sentiments of life which are characterized by the behaviors of two elements. Bromides and sulphites are two bents of mind. They are named according to the behavior of bromides and sulphites. They are opposite in their approach and action. Bromides are typical, orthodox, and blind followers of set norms, customs, traditions, and social practices. They remain with the mob. They behave in accordance with society. They are not imaginative and creative. Everybody likes them because they like others. They don't do unusual things and practice according to others' expectations. They make certain rules in life and follow them strictly. They do not think deeply. Their actions and thoughts are predictable. They are found in majority. Bromides are typical, while sulphites are radical, creative, and innovative. Sulphites are revolutionary. They oppose others in actions and thought. They appear suddenly and do something unusual. They contradict social norms, customs, values, practices, and traditions. Their arrival is blasting. They can't be expected regarding their behavior and thoughts. Sulphites are very important and much needed in the society because they bring change. Only change is enduring in the world. The evolution in the human society is due to them. All the great writers, artists, and scientists were sulphites because they thought different from others and brought innovations. Their behavior was unpredictable as they didn't follow the set norms, customs, beliefs, and social practices. They were rebels in the society. Hamlet opposed the king and made him realize his guilt. He was unorthodox and having sulphitic qualities in himself. Becky Sharp in Vanity Fair by Thackeray is also unusual and imaginative character. Thus she has characteristics of sulphites. American President Roosevelt was also a sulphite in politics, while Mary was sulphite in writing. G.B. Shaw, a great revolutionary writer, was a sulphite. Some writers may contradict in their ide. ये मज़मून ज़िंदगी के दो जज्बात के बारे में है जो दो अनासिर के रवैयों से ज़ाहिर होते हैं। ब्रोमाइड्स और सल्फाइट्स दो ज़हनी रुझानात हैं। उन्हें ब्रोमाइड्स और सल्फाइट्स के रवैये के मुताबिक नाम दिया गया है। उनका नुक्ता नज़र और अमल एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ब्रोमाइड्स रिवायती, क़दामत पसंद और मुकर्ररा उसूलों, रस्मों रिवाज, रवायात और समाजी तरीक़ों के अंधे पैरोकार होते हैं। वो हुजूम के साथ रहते हैं। वो मुआशरे के मुताबिक बर्ताव करते हैं। वो तख्लीकी और इख्तिराई नहीं होते। हर कोई उन्हें पसंद करता है क्योंकि वो दूसरों को पसंद करते हैं। वो गैर मामूली काम नहीं करते और दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करते हैं। वो ज़िंदगी में कुछ उसूल बनाते हैं और उनकी सख्ती से पैरवी करते हैं। वो गहराई से नहीं सोचते। उनके अमाल और ख़यालात पेशगोई के काबिल होते हैं। वो अक्सरियत में पाए जाते हैं। ब्रोमाइड्स आमतौर पर रिवायती होते हैं, जबकि सल्फाइट्स इनकलाबी, तख्लीकी और जिद्दत पसंद होते हैं। सल्फाइट्स इनकलाबी होते हैं। वो अपने अमाल और ख़यालात में दूसरों की मुखालफत करते हैं। वो अचानक नमूदार होते हैं और कुछ गैर मामूली करते हैं। वो समाजी उसूल